Hello, everyone. Welcome back to the Third Band Cricket Show with my man Kalim K. Joining me on the stream for a very important stream, जो कि अभी तो अच्छी लग रही है बात करने में, but we don't know what we will be in the next 24 hours. So जो कि हमारे पास मन में हमारी बात कर रहे थे, हम मैच के पहले जो हम ये हमारे टेंशन है, पेट में जो बटरफ्लाइज हैं, वो जो दौड़ रहे हैं, अंकित तेरे पेट में सब निकाल दे, आज भड़ास निकाल दे, बिकॉज वी नेवर नो कल क्या होने वाला है. आई एम वेरी होपफुल. आई थिंक वी हैव गॉट दिस कवर्ड, बट स्टिल वी हैव गॉट. और हम दोनों ने काला रंग पहना हुआ, दैट मीन्स वी बोथ नो विच टीम वी आर फेसिंग टुमारो. अंकित, फर्स्ट थॉट्स और व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या है, फीलिंग क्या है इस वक्त? आई थिंक एज ऑफ नाउ तो यार फर्स्टली तो सबको दिवाली की सबको बहुत शुभकामनाएं एंड होपफुली दिस दिवाली गोस वेल फॉर एवरीवन एंड स्पेशली आई थिंक क्रिकेट फैंस they are kind of waiting till 19th November for so many reasons. But coming back to what you asked, like अभी नो I honestly feel कि we all were expecting India semi-final तक तो पहुंचने वाला है and वो हुआ है. But in the way they did, I think everyone was not kind of surprised. But सबको अच्छा लगा कि winning all the matches is kind of not easy in a World Cup stage यार. होम प्रेशर अलग है देन एक्सपेक्टेशंस पिछले कुछ टाइम से नॉकआउट्स तक फाइनल्स तक जा रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट फाइनल स्टेप डन. बट अभी नाउ 9 wins, everyone the kind of season or the flavor of winning every match was different. I think especially वो जो fielding awards भी मिलते थे हर मैच में एक डिफरेंट स्पाइस लाया है अभी तक लीग स्टेजेस में. लेकिन अब जिसके लिए अब यहाँ से एक्चुअली आई वुड से कि एक स्टेप हमने ऑलरेडी पार किया लेकिन 2 steps एंड दिस वन विल बी मोर क्रूशल देन व्हाट द थर्ड स्टेप विल बी. सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो हमारे ऑपोजिशन है आई थिंक द ओनली थिंग दे हैव इज की लेस एक्सपेक्टेशंस एंड आई थिंक वही चीज उनको फेवर करती है खास करके द मैन इन ब्लैक. एंड आपने सही कहा कि हम दोनों ने ब्लैक पहना एंड वी ऑल नो the team in black. I think they know how to be a dark horse and we all know what a dark horse can do and we have this हम लोग ने तो फेस ही किया पिछले कुछ टाइम से बट लुक्स गुड यार. आई मीन वी रियली आर समवन फेवरेट्स रहेंगे हम नेक्स्ट मैच में. वी ऑल नो इट बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी जितना अभी तक रहा है लीग स्टेजेस में और जितना हमने करके दिखाया है. इट विल बी अ डिफरेंट चैलेंज बट आई एम प्रीटी श्योर द मैन इन ब्लू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हाँ यार, आई मीन आई एम नर्वस अ बिट, बट ये थोड़ी पॉजिटिव नर्वसनेस है. आई थिंक दैट्स लाइक अ गुड वे टू पुट इट. राहुल इज सेइंग यार पीछे वाली फोटो, यार डराने का इरादा नहीं है. ये फोटो अभी मेरे दिमाग में बस गई है, पता है, फॉर सम रीजन. आई जस्ट डोंट आई वांट टू गेट ओवर दिस एंड आई थिंक द ओनली वे आई कैन गेट ओवर दिस इज अगर हम कल हरा देते हैं न्यूजीलैंड को इन अ वेरी एंड वी रीच द फाइनल्स. यार आई थिंक ये जो 4 इंच थे ना यार 2019 में, आई थिंक एवरी ईयर हम लोग एक एक इंच पास आ रहे हैं. नाउ फाइनली वी हैव अराइव्ड and who better than New Zealand to face in the semi-final and beat them and try to not get carried away, क्योंकि ये गेम बहुत बड़ा गेम है. आई थिंक राइट नाउ पीपल मे थिंक कि यार न्यूजीलैंड को हम क्रिकेट खेलते हैं ये वर्ल्ड कप में. न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट 4 games इन दिस वर्ल्ड कप, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एंड दैट्स द रीजन वी आर श्योर शॉट फेवरेट्स. बट अगर कोई इंडिया की बोगी टीम है, अगर कोई टीम ऑन द डे इंडिया को हरा सकती है इन फ्रंट ऑफ देयर ओन क्राउड, आई थिंक इट्स न्यूजीलैंड. एंड उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार ये करके दिखाया. आई थिंक द 2016 T20 इन नागपुर, the 2019 semi-final in England, and the World Test Championship final in 2021, if I'm not wrong. So I think New Zealand they prefer all of this कि यार इंडिया की crowd इंडिया को support करे और हमारे हमारे against रहे. I think they would thrive on this game, and to be honest, they have the players to beat Team India, to be very honest. But on the other hand, the kind of cricket India खेली है ये tournament में, I think no one expected them to blow each and every team away that convincingly. Ankit. Yes, I mean, as you mentioned कि जिस तरीके से हमने खेला you start feeling like कि यार I mean अगर कोई और टीम भी होती like consider इंग्लैंड होती ऑस्ट्रेलिया होती they could have 9 matches जीते. You start feeling like कि यार हम लोग चाहते हैं कि obviously as a neutral fan आपको लगता है कि यार I think this is one of the teams जो deserve करती है वर्ल्ड कप जीतना. And in that case I will feel कि the same कि जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेला है not as a just a fan but you generally start feeling कि यार I mean 9 matches जीतना एवरी टीम प्रोड्यूस एंड अभी नो लेट्स बी वेरी फेयर कि मुझे एक भी मैच लगा नहीं कि जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार इस टीम को तो हरा देंगे अब बिकॉज हर टीम ने मैच जीता है जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं था. लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 एडिशन
अफगानिस्तान एक भी मैच जीता नहीं था, तो काइंड ऑफ उनके सामने हर टीम जीती थी। लेकिन इस बार नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान, द टीम्स लाइक उन्होंने इम्प्रेस किया है एंड चैलेंज प्रोड्यूस किया है। सब याद कर रहे हैं वो मैक्सवेल की इनिंग्स, लेकिन अफगानिस्तान ने उस तरीके का प्रेशर बनाया तब जाके मैक्सवेल का स्पेक्टेकुलर आया। सो एक ऐसे वर्ल्ड कप में जहां हर टीम चैलेंजिंग रही है, उस सिचुएशन में घर पे वर्ल्ड कप खेलना एंड देन विनिंग 9 मैचेस, इट इज स्पेक्टेकुलर। बट एज आई सेड कि वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग एंड वी ऑल न्यू कि इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगा, लेकिन आई थिंक दिस फाइनल स्टेप्स एंड आई फील कि ये स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशल है जो हमें पार करना है। आई फील कि चलो ये तो बोल सकते हैं हम लोग, लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ वी विन सेमीफाइनल देन वी आर विनिंग द वर्ल्ड कप, बट दिस इज गोइंग टू बी बिगर चैलेंज देन व्हाट फाइनल कुड पोटेंशियली बी। सो लेट्स सी, आई थिंक लाइक मे द बेस्ट टीम विन, बट थोड़ा टेंशन का माहौल भी है, बट यू नो आई फील एवरीथिंग कुड गो वेल फॉर टीम इंडिया। हाँ यार, I think I agree क्योंकि सेमीफाइनल, I consider semi-final as a bigger game than the final. I think ज्यादा pressure semi-final जीतने का होता है rather than the final. I think on a final day, I think it could go anyways. I think it could be your day, it could not be your day. But semi-final, you have it in your control. I believe कि यार आप हरा सकते हो सामने वाले opposition को. And to be Yeah. very honest, I if there is any team जिसको मैं face नहीं करना चाहता था ना in the semi-final, that was New Zealand, or maybe like in the final as well. I mean, if India makes it through, I would have not liked New Zealand facing them in the final, क्योंकि let's not forget, even they are on their way to redemption. उन लोग को 2019 में they know what happened, and they want to change that. They want to lift that World Cup as well. And Kane Williamson and this guys, I think बहुत प्यार से एकदम हंसी मजाक कर करके they like being everyone's second team. राइट नाउ आई थिंक अगर कल न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देती, आई डोंट कंसिडर न्यूजीलैंड एज माय सेकंड टीम एट ऑल एवर अगेन, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता जाएगा. एंड आई एम फेड अप ऑफ न्यूजीलैंड एंड देयर प्लेयर्स, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर दिस पॉइंट. Other than that, Team India practicing really well. I think वानखेड़े में थोड़े clips देखे मैंने. Everyone looks really good. I saw Virat Kohli batting left-handed as well, which is I hope that's not the case tomorrow. But yeah, I think coming back to the way India has played so far in this tournament, Ankit, especially the bowling attack, fast bowlers. Do you think Hardik Pandya's injury was a blessing in disguise for Team India? नहीं यार, आई मीन उतना तो आई वोंट से कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज ही स्टिल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैलेंस। आई थिंक अगर इवन आज अगर ऑब्वियसली वैसे होने नहीं वाला है, बट एक इमेजिनरी वर्ल्ड में इफ दिस हैपेंस कि हार्दिक पांड्या इज अवेलेबल फॉर टुडे, ही वॉक्स स्ट्रेट इन। बट आई थिंक यू वुड से बिकॉज फॉर अ प्लेयर लाइक सूर्य कुमार यादव, बिकॉज दिस आर द सिचुएशंस जहाँ पे हम लोग बैकअप्स क्रिएट करते हैं एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनी प्लेयर टू कम इन, बिकॉज उसके पहले भी he was not a he was not part of the starting 11 when Hardik was there, because he used to bat at number 6. Hardik Pandya बॉलिंग के भी 6th ऑप्शन हो जाते हैं आपके, सो वो बैलेंस आते थे। एंड बट सूर्य कुमार आई थिंक बैटिंग एट दैट पोजीशन, और ये एक्सपेक्टेशन से शायद बहुत सारे फैंस स्पेक्टेटर्स से, एंड आई थिंक ही हैज डन वेल अभी। एंड आई डू फील लाइक कि वन थिंग इज कि हमें बॉलर्स की प्रॉपर 5 बॉलर्स है, सो 6 बॉलर की जरूरत पड़ी नहीं है। हालांकि वो नीदरलैंड्स के मैच में सबको थोड़ी दिवाली की तोहफे मिले, आई वुड से, फ्रॉम टीम इंडिया। शुभमन गिल had his hand, and Rohit Sharma, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, so 7-8 options, but obviously ऐसी situation नहीं आए, better है, because I think जो 5 bowling options, I think they have really done well. Like ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है या फिर थ्रू आउट द टीम का प्रदर्शन देखिए, all 11, 14, 15 players, I think जब जब वो मौका मिला, I think they have stepped up, and that's why we are here when winning 9 matches. So that is what, and I don't feel कि कल कोई कॉम्बिनेशन में भी तब्दीली नहीं आएगी. So I won't say blessing in disguise, but I feel कि थोड़ा रोल क्लैरिटी मिल गया कि प्रॉपर 6 बैटर्स और काइंड ऑफ 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन. So that was good for a team combination. I remember kind of West Indies in 1980s used to go with this stuff of 5 batters, 5 bowlers, and then 1 wicket keeper. So kind of nostalgic in that terms. Fair enough. I think अगर कोई टीम आउट ऑफ द रिमेनिंग 8-9 टीम्स है जो इस, बिकॉज एक चीज जो करी नहीं अब तक कोई भी टीम ने, इज ट्राई टू अटैक दीज फास्ट बॉलर्स फॉर टीम इंडिया. आई मीन maybe it is like very difficult to attack them, जो lines जो length hit कर रहे हैं the deck. I think that is really difficult maybe for the batsman. But अगर कोई team है who would show intent against India and their fast bowlers, I think that is New Zealand. और वानखेड़े की pitch ऐसी है ना that it allows you to attack fast bowlers. And Sri Lanka, I mean, I wasn't expecting much from Sri Lanka, to be honest, in facing these fast bowlers, but
New Zealand have those players. I mean, Devin Conway, Rachin Ravindra, the kind of form this guy, like this youngster, is in. Ken Williamson at three, Daryl Mitchell at four. I think they have the top four to score runs on a batting pitch. So, how do you think? How big a factor do you think toss will be? क्योंकि अगर कोई हम score अगर हम for example India bats first, even a 300, I don't know whether that's a safe score in a semi-final at on a 1 KD pitch with Dew coming in. I think it's a good point you made because knockouts में teams like Australia, I'm not sure कि इंडिया का वो किस तरीके का आइडेंटिटी है because over the years जो knockouts हमने खेले like 2011 final we preferred chasing and even though 2015 में हमने जो match हारा था I think against Australia I think we were chasing in the semi-final and 2019 I don't remember toss किसने जीता था but we were chasing so I feel India is more of that team जो chase करना पसंद करते हैं on the opposite like Australia हो New Zealand हो I think they are teams who prefer to bat first so I feel from India's point of view, I would say I won't mind India, batting first. अभी तक वो रहा है, but इस बार दोनों डिपार्टमेंट्स उतने ही बैलेंस है 50-50. Obviously, अगर हमारी बॉलिंग भी पहले आई या फिर रोहित decides to ball first, obviously वो भी उतना ही सिमिलर रहेगा. But I feel कि न्यूजीलैंड as a chasing team is less dangerous than New Zealand as a defending team. I feel like कि they are one of those teams. इवन जो वर्ल्ड कप फाइनल आती है इंग्लैंड ने जो स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन या फिर जो द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन जो कहते हैं आई थिंक 240 का ही टारगेट था इवन हमारे सामने 240 का ही टारगेट दिया था उन्होंने बट द वे दे मैनेज टू डिफेंड द टोटल्स आई थिंक एंड बड़े मंच पे आई थिंक दे हैव दैट एक्सपीरियंस सो पर्सनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वोंट माइंड पुटिंग न्यूजीलैंड टू chase rather than putting them to bat first and they might score less but I think I consider them as a dangerous team when it comes to knockouts and 230 240 I think Kane Williamson knows how to take the next move so in that terms I would prefer India to bat first but let's see I think what Rohit and the management thinks. Yeah, I think यही एक reason था. I think Rohit Sharma ने in the press conference as well he said कि maybe the toss is not big of a factor at 1 KD. I don't know why he said that because in my opinion toss is a big factor at 1 KD. But maybe I think he's trying to just calm the nerves down कि अगर हम toss हार भी जाते हैं और जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता so the team is still up for it and I think this team is up for it especially the batting lineup the batting order if you see the kind of form everyone is in. Shubman Gill is in form. He comes with runs in his bag. Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul with hundreds at Bangalore as well. So overall, the top six have scored runs, and that should not be a worry right now for Team India. But this is the last place you want your top order to collapse. I think हर World Cup में we kind of see one game happening जहाँ पे India kind of fumble with the top order. I really hope this is not the game and we see a good the perfect batting setup for Team India. Other than that, I think we have the bowling to defend any score. I think like you said कि तुझे चलेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है. I think I am open with India batting first as well. I think I have my faith in the fast bowlers. I think जो जिस तरीके से Shami, Bumrah and Siraj have bowled, I think given the fact that we are facing a team in the semi-final जो 4 मैच हार के आई है, I think they've lost almost 50% of their games in the tournament. They still made the semi-final. So I think that gives me a bit of confidence कि New Zealand is also not in good form right now. But yeah, I think the time will tell कि यार कल क्या preparation है because the entire crowd, the entire country is going to be behind Team India and not just home. I think abroad as well, overseas as well. There are a lot of Indians cheering for Team India tomorrow. So should be a good game. I think एक proper semi-final होने वाला है is what I feel. I don't think it will be a one-sided game. I think it might go down to the wire. I think अगर India chase भी कर रही है या defend कर रही है, I think New Zealand will not give up till the end is what I'm trying to say. राहुल का कमेंट है इधर भी आईपीएल वाला रूल होना चाहिए. यस आई कंप्लीटली एग्री टू दिस पॉइंट. अगर आप 9 मैचेस खेल रहे हो, अंकित व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक the top ranked side. Go ahead. Yeah. नहीं आप कंटिन्यू करो. Like that's what I'm saying कि जो भी top ranked, I mean in the IPL we see this rule and I kind of like that rule कि first or second को they get 2 opportunities to make it to the finals. I think that is a fair call by any board and by for any competition जो over a span of 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने चलता है. I think it is not fair for the first rank or the top 2 ranked sides to just get one opportunity because
like I said, एक आपका दिन खराब जाएगा, then you're literally out of the competition after playing probably the best cricket out of everyone. And that's the thing. I think even because even जो टीम 4 पे है like न्यूजीलैंड, I won't say कि उन्होंने उतना अच्छा क्रिकेट खेला है, because even आखिरी दिन तक जाना इन वर्ल्ड कप से आईपीएल में तो अलग होता है, because 14-15 मैचेस होते हैं, देन उस सिचुएशन में सिनेरियोस आते हैं जहाँ पे किसी टीम को 200 के अंडर ऑल आउट करना होता है, लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सामने था, बट यू नो दे वर इन अ सिचुएशन, अगर कुछ मिराकल होता तो देन न्यूजीलैंड वेर आउट ऑफ, ऑब्वियसली वो तो एक आउट ऑफ द काइंड ऑफ नॉट इवन इमेजिनरी सिनेरियो था जहाँ पे पाकिस्तान को 380 कुछ तो ऐसा कुछ बना था, बट अगर वैसी सिचुएशन है इसका मतलब आपने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है कि किसी और के ऊपर अगर आप निर्भर हो, विच मीन्स they haven't played that good cricket. I think I will say कि 2019 में they played way better than this, but this time they haven't really. And उसी हिसाब से हमने we played really well. And as you mentioned, कि एक और डे जहाँ पे you know if you lose by chance, and खास करके जो नंबर टीम इंडिया जैसी टीम खास करके जिन्होंने 9 मैचेस जीते हैं, ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, बट यू काइंड ऑफ फील अनफेयर कि यार आई मीन आपने पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच हारा और वो सेमीफाइनल के, एंड देन यू गेट नॉक्ड आउट ऑफ दिस. सो थोड़ा है अभी भी, बट आई फील आई थिंक दिस थिंग्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंसीडर, बट होपफुली कि 1-2 साल में होना चाहिए इम्प्लीमेंट, होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी. आई डोंट सी इट हैपनिंग इन द 2024 वर्ल्ड कप. वहां पे तो स्टिल आई गेस 20 टीम्स है, सो ग्रुप पार्टिसिपेशन ही अलग होगा, बट hopefully till 25 someone puts up this point ahead, but I do feel like कि यार I mean होना चाहिए एक second chance, खास करके top 2 teams के लिए तो definitely. True, I agree. और say for example, तेरे हिसाब से what should any team do batting first? I think there is only one decision both the sides should be looking at doing, but I want to know तेरा क्या opinion, and then I'll be like yeah, I think that is what I would prefer doing, either chasing or defending. What would you prefer? That's tough. I mean, from any point of view, जिस तरीके का मैं fan हूँ, I personally feel I would prefer chasing, but teams have been like I don't see big teams preferring to chase. Rather कुछ teams ऐसे भी होते हैं, they like to not win the toss, because then चाहते हैं कि let the other team choose, because then regret नहीं होता कि मैंने batting क्यों लिया, मैंने fielding क्यों लिया. So उस तरीके का mindset भी होता है, they want oppositions to win the toss, but obviously from my point of view, one days में आजकल I feel chasing has been very easy. I mean 300 350 इस टूर्नामेंट में ही बहुत बार 400 आई थिंक इंडिया ने बनाए, आई गेस अफ्रीका ने बनाए, मेनी टीम्स केम क्लोजर टू 370 380, बट वानखेड़े का अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का एक गेम हुआ था, वहां पे 400 बनाए थे. ऑब्वियसली इंग्लैंड ने उस तरीके का क्रिकेट खेला नहीं है, सो वहां पे इजीली डिपेंड हुआ, बट जो वानखेड़े में मैचेस हुआ आई फेल्ट कि डिफेंडिंग वाज मोर इजियर, या फिर टीम से उस तरीके का प्रदर्शन किया. इंडिया श्रीलंका ऑब्वियसली मोर ऑफ वन वे गेम, सो उतने क्लोज मैचेस हुए नहीं उस तरीके को डिफाइन करने के लिए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान अगेन नाउ दैट्स द गेम जहाँ पे कुछ स्पेक्टेकुलर होता है. मैक्सवेल को 200 मारने पड़े, एक अनइजी सिचुएशन था, तो अभी तक ऐसा नॉर्मल चेस नहीं हुआ है. सो आई वुड से डिफेंडिंग हैज बीन इजी, बट आई एम अ फैन जो प्रेफर करता है कि बिग स्टेजेस में गोइंग फॉर चेसिंग मोर ऑफ सिक्योर्ड फीलिंग होती है. बट I think it will be a good game, and I think Rohit and Kane Williamson, I think both are tactical captains. I'm pretty sure they have a good plan with what they will stick with. So let's see. I mean, I think the toss will be very crucial. Like though it decision, and then you have to think the best out of it in a shorter period of time, like 10-15 seconds ही तो मिलते हैं, I mean बोलने को. Sure, but What do you feel like? I agree to the fact that it is going to be a tactical battle, and both captains are very astute in terms of their planning. जो भी the decisions they kind of end up taking on the field in different game situations. But I don't know. मेरे हिसाब से, given the fact that in 2019 we tried to chase, and how much were we chasing? Around 240, 250 or something. If I'm not wrong, we were chasing against New Zealand, and in the first semi-final as well in 2019 against England, Australia, if I'm not wrong, जो England जीती थी, the score wasn't that big as well. So I don't mind India batting first as well, because the crowd is going to be behind you, and you do not want that scoreboard pressure, all of a sudden if you're like 1 or 2 down early and chasing a score in the semi-final. And given that it's New Zealand on the other hand, I think just get rid of that thing कि यार ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है. Just instead of chasing, let's just go and bat first and let our bowlers take care of it, because right now जो form में हमारे bowlers है, I think they can literally gun down any opposition batting lineup right now. I think probably the best in the world, in my opinion, Team India's 3 fast bowlers. So I don't know. I think
if I had been given a chance, मेरे हिसाब से I would prefer batting first, maybe like a 55-45 or maybe a 60-40 in favor of batting first. Rahul is saying in Australia in 2015, Australia lost one game. Uh, also lost matches in 2019 World Cup in the home ground. But look at the team. India did not do the single game till the last game. Yeah, I think that's a good point. But will it matter? Because we've beaten all the sides in the competition. If we do not step up tomorrow, I don't think anyone's going to remember. Uh, you know, I mean, we will remember, of course, but we're not going to talk about it as much as we did, as we are doing right now, to be honest. So, horses for courses wala system hai. I think we have to win. I mean, there's no middle ground in this after this game. I think this World Cup is probably the last opportunity for pretty much most of the senior players in the squad. After that, I do not see most of them stretching till 2027 their careers. Because the amount of cricket which we play, I think this is probably the last dance, like they say, for these players, Ankit. Totally agreed, yeah. I mean, because I think एक डिसीजन एक वर्ल्ड कप आई थिंक आजकल का जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड रहा है यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि बहुत साइमल्टेनियसली चेंजेस होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक इंग्लैंड का जिस तरीके का कैंपेन रहा है आई डोंट थिंक सो यहाँ से द लाइक्स ऑफ जो रूट खास करके बोलने में भी अजीब लग रहा है बट फॉर प्लेयर्स लाइक हिम या फिर इवन डेविड विली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था लेकिन ही न्यू इट कि इसके बाद तो इंग्लैंड वेर नॉट लुकिंग फॉर हिम या फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और ऐसे चेंजेस आते हैं बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द एज बिकॉज टीम को लगने लगता है कि लेट्स लुक एट द फ्यूचर लेट्स लुक एट द लार्जर प्लान एंड इसीलिए आई थिंक टीम इंडिया एज ऑफ नाउ तो सब कुछ अच्छा गया है बट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि एक डिसीजन आज आप जीतो तो आपका कल देखा जाएगा बट आज अगर कल लाइक कल जो रहेगा कल का मैच रहेगा अगर बाय चांस आप हार जाते हो देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट वर्ल्ड कप देन यू सी अ साइमल्टेनियस चेंज 2024 वर्ल्ड कप अब आई वोंट माइंड सेइंग कि बीसीसीआई जिस तरीके की द वे दे हैव हैंडल्ड थिंग्स बिफोर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नो रीजन एंड वहां पे जस्टिफिकेशंस भी नहीं मिलेंगे बिकॉज इसके पहले भी नहीं मिले बहुत सारे सो उस लिहाज से आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिग प्लेयर्स आई थिंक एंड स्पेशली आई मीन इतने सालों की मेहनत लाइक द लाइक्स ऑफ रोहित विराट इवन जसप्रीत बुमराह आई थिंक बहुत मेहनत की है पिछले कुछ टाइम से ऑल द एफर्ट्स इट्स टाइम टू सी द ग्लोरी दे हैव बीन वेटिंग फॉर एंड इससे अच्छा क्या मौका घर पे वर्ल्ड कप अभी तक तो सब कुछ सही गया है और सबके पास फॉर्म है मोर इम्पोर्टेंटली सो टू फिनिश इट ऑन अ हाई नोट स्पेशली इन दिस फॉर्मेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेस्ट और T20 में I think we don't know what's next for them, but as of now, one day, I think it's very important for them to finish it on a high. Yeah, I agree. I think जो तूने point बताया कि we have done so well in this competition. I think I am highly surprised कि यार how did Jasprit Bumrah manage to stay fit for 9 games straight? I think that itself is a big part for Team India. I think, but yeah, जैसा कि हम we're trying to say before the start of the stream, जब भी कुछ इतना अच्छा जा रहा होता है ना फॉर आई थिंक इट्स लाइक ह्यूमन मेंटालिटी या कुछ भी हमारा माइंडसेट वैसा बना कि यार इतना अच्छा सब कुछ जा रहा है कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है एंड आई जस्ट होप दैट टुमारो और इज नॉट द डे फॉर समथिंग रॉन्ग टू हैपन एज अ क्रिकेट फैन एज एन इंडियन क्रिकेट फैन बट या आई एम keeping my fingers crossed. I'm going to go and watch the game with my friends, party it out completely in a different country. There are going to be hundreds of Indians around me as well in overseas country cheering for Team India. So I just feel it's going to be a great game. I think we are going to win the game. I think this time around we do have the bogey team in front of us, but अगर ये टीम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है बोगी टीम वाला वर्ड मे बी आई डोंट सी कमिंग इन फ्रंट ऑफ दीज गाइस. एग्रीड यार आई मीन अभी वो टैग से बिकॉज एक अभी वक्त भी तो बदल गया लाइक इट हैज बीन 4 years इवन न्यूजीलैंड ने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला लाइक आई मेंशन कि जितना उन्होंने खेला था खास करके 19 के वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में दे हैव गॉट गुड यंगस्टर्स लाइक अभिनव लेट्स बी वेरी फेयर रचिन रविंद्र किसने सोचा था लाइक इवन इन द एक आउट ऑफ द इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते आई वुड हैव थॉट कि शायद ग्लेन फिलिप्स या फिर उस इवन डैरी मिचेल का उस तरीके का वर्ल्ड कप जाता बट रचिन रविंद्र वो शायद प्लेइंग 11 के इसमें भी नहीं थे लाइक इवन द स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑब्वियसली केन अनअवेलेबल थे बट उस सिनेरियोस में स्कोरिंग 500 प्लस रन्स लाइक की द ओनली टाइम आई रिमेंबर उनका नाम मैंने इसके पहले सुना था वो था इट वाज इन द कानपुर टेस्ट जहाँ पे उन्होंने ड्रॉ करवाया था दैट वाज ओनली टाइम जहाँ पे उतना नाम उनका आगे आया था
but it really feels nice कि youngsters आ रहे हैं, the likes of सारे बड़े नाम इर्द गिर्द है, वार्नर, रोहित, कोहली, उनके इर्द गिर्द में you score 500 plus runs, and उनके टीम के कप्तान खुद केन विलियमसन. So it's good to see youngsters coming up, but I think this time it will be tough for New Zealand. And again, the pressure won't be on them because kind of dark horse or something like that. But Abhi, it's time for Kane Williamson. I think as a player he needs to come good. Obviously he's a great captain, but अभी तक तो उनका भी टूर्नामेंट बहुत सारे मैचेस मिस किए. But I think high time for him as well as an individual to come good, because बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा. अभिनव, अब जिस तरीके कैसे वो जो फाइनल गया था उनके लिए, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर जैसे हमारे लिए न्यूजीलैंड रहा है, उनके लिए इंग्लैंड की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो फाइनल रहा है. सो उनके लिए भी एक बहुत स्पेशल ओकेजन रहेगा. लेकिन वी ऑल नो कि दोनों में से कोई एक ही जीत पाएगा और किसी एक को जाना पड़ेगा. सो may the best team win, but really it will be a great battle to watch out for, and hardly now I guess 15-16 hours away from the game. हाँ, देखा जाए तो आई थिंक द न्यूजीलैंड का भी जो टीम कॉम्प्लेक्शन है, आई मीन विद ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, I don't know. I think even it could be their last World Cup, their last game as well. To be very honest, so I think pretty much. I think I'm pretty sure that this is last World Cup for Kane Williamson. I don't see him, playing in the 2027 one. But yeah, I think overall, I think you can say the same thing about New Zealand senior players. कि यार ये उनका last World Cup है. They want to win the trophy as well. So yeah, I think like you said, I agree. It's going to be a good game. I don't think it's going to be very easy for India or New Zealand to win this game. Should go down to the wire, but yeah, I just hope it's India who ends up at the right, on the right side of the result at the end of the game. Other than that, second semi-final bhi hai. But first of all, prediction, Ankit, what do you think? Who would you prefer in the second semi-final to win? If India wins the World Cup, who do you think? If India wins the first semi-final, who do you think you would want to face in the final? Very difficult. Like अगर इंडिया जीतती है अगेन ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स इज अ वेरी डिफरेंट टीम. साउथ अफ्रीका आई डोंट थिंक सो दे हैव प्लेड अ फाइनल येट. उस हिसाब से फॉर देम आल्सो लाइक कि थोड़ा बुरा उनके लिए भी लगता है कि द वे द लाइक्स ऑफ हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसिस, इवन क्विंटन डिकॉक जो खुद खेल रहे हैं 15 में बहुत क्लोजर आए थे उस मंजिल से, लेकिन बहुत दूर रह गई वो मंजिल. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही था. लाइक कितना क्रिकेट रिलेटेबल, ऑलरेडी 9-10 टीम्स एंड सबके अगेंस्ट हर टीम की कुछ ना कुछ मेमोरी है. लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंडिया न्यूजीलैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ले लो, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड. लाइक एवरीथिंग हैज बीन सो रिलेटेबल इन दिस स्मॉल क्रिकेटिंग वर्ल्ड. सो उस लिहाज से मैं पर्सनली अगर मुझे पूछो तो आई वुड वांट साउथ अफ्रीका टू कम एंड आई वांट वन ऑफ साउथ अफ्रीका, और लाइक इंडिया तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस है, लेकिन अगर बाय चांस इंडिया नहीं तो फिर काइंड ऑफ आई वुड वांट देम टू कम इन. But to face Australia in semi-finals, now that's the different test and going to be a different challenge for them. But Abhinav, let's be very fair. अफ्रीका ने जिस तरीके का वर्ल्ड कप खेला है, like this has been something 15 में भी खेला था, but किसी को लगा नहीं था कि फाफ डू प्लेसिस, एबी डिविलियर्स जाने के बाद इस तरीके का क्रिकेट कोई खेल सकता है. हेनरी क्लासन, एडम मार्क्रम एंड द लाइक्स ऑफ रसीवान हुसैन, ये लोग तो 19 में भी थे, बट कुछ तो अलग किया है इस वर्ल्ड कप में. सिर्फ एक ही इंक्लूजन मुझे याद आ रहा है, कोएट्जे और मार्को एंसन, बट बाकी टीम वही है जो शायद 19 में भी थी. सो इट हैज बीन अ बिग टर्न अराउंड फॉर देम. बट आई थिंक नाउ उनके लिए भी वही आई वुड से सेम सिनेरियो है कि ये जो स्टेज है सेमीफाइनल का, यू गेट थ्रू इट, देन इट्स अ ग्रेट चांस फॉर बोथ द टीम. जो भी एक्चुअली फाइनल्स में आता है, आई थिंक विनिंग सेमीफाइनल विल बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज सेमीफाइनल इज मोर डिफिकल्ट I would say than the final. So उस हिसाब से अफ्रीका, but Australia will be a bigger challenge for them. What Yeah. do you feel? I would take South Africa in the final, man. I think I don't want to face Australia in the final. I think if there is one team, क्योंकि at one point कोई Australia को chance भी नहीं दे रहा था, to be very honest, to make it in the top four. But the way they came up, I think, मतलब, I think they've literally been very silent at the back. I think one game at a time, kar karke. They've decided that we just silently make it into the top four, and Glenn Maxwell allowed them with that innings in Mumbai. So I think I don't want to face South Africa. I don't want to face Australia in the final in any course. I think given the fact that South Africa are nicknamed as the chokers, I think I would still prefer them. And I just feel that we have the bowling to bowl them out really quickly. I think हमने साउथ अफ्रीका को
ईडन गार्डन्स में जिस तरीके से हमने bowling करी, I think we can do that again as well, and we can face their fast bowlers and their spinners easily as well. So I just feel Australia on the day could be a big challenge, and I just don't want that again those nerves in the final if we make it. If New Zealand win it, I don't care about the final who plays, who wins the trophy. But yeah, if India wins it, I definitely want South Africa in the final. I mean, they can beat us as well, but I'm just a bit more confident with South Africa, given that Australia in ICC tournaments you can never knock them out in any shape or form. Akshat is saying we are winning this tomorrow. Believe yes, the entire country believes Akshat along with you. 1.4 billion people, 1.5 billion whatever people plus the millions around the world. I think everyone have got their alarm clocks, जो भी time घड़ी वड़ी सब set करके they've cleared out the schedule, work schedule, whatever schedule they have, just because they want to watch those 8 and 9 hours of ODI cricket tomorrow in Mumbai. And but अंकित तुझे पाकिस्तान चलती या न्यूजीलैंड चलती in the semi-final? I wanted to know that as well, because I've talked to a few people around here, थोड़े Pakistani friends. I think they are saying that they would not prefer facing India in the semi-final. But what is your opinion as well? See, पाकिस्तान आई थिंक ऑब्वियसली एट टाइम्स किसी भी टीम को आप फॉर्म के बेसिस पे जज करते हो, लेकिन ये ओपिनियन आपने इसके पहले भी बहुत सुना होगा और इसके आगे भी मुझे लगता है हमें सुनने मिलेगा कि द अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर ऑफ पाकिस्तान. लाइक इवन 2022 वर्ल्ड कप में आई रिमेंबर कि after losing the first game and after all the mess, and if I'm not wrong, Abhinav, they lost against Zimbabwe as well in the T20 World Cup and still made it to the final in some or other way. So and उसके बाद भी final was kind of very close. So वो unpredictable factor की वजह से it's very difficult. But the way we have played, I would have preferred like a team like Pakistan, but वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई फील कि सेमीफाइनल टीम्स और जो लीग सीरीज में आप जो गेम्स खेलते हो और सेमीफाइनल में खेलते हो ना, आई थिंक हर टीम में वो एक स्लाइट चेंज देखने मिलता है. कुछ टीम्स का और पॉजिटिव हो जाता है, कुछ टीम्स नर्वसनेस की तरफ हो जाती है. सो उस लिहाज से थोड़ा चेंज तो हर टीम में आता है. सो थोड़ा जज करना भी एट टाइम्स मुश्किल है. बट द वे वी हैव प्लेड, आई थिंक आई डोंट सी कि एक साइमल्टेनियस चेंज हमारे गेम में इट विल गो डाउनवर्ड्स. आई फील कि वो एक तो स्टेबल रहेगा या फिर इट विल ऑब्वियसली गो अप. बट I think उस लिहाज से पाकिस्तान न्यूजीलैंड में से I would have preferred facing Pakistan than New Zealand, because New Zealand is a very different team when it comes to knockouts. I agree. Especially India. Completely agree. I think Rahul is also. I think this is a good question to ask. इस बार धोनी और गंभीर कौन बन सकते हैं? I mean, given the fact that you are playing a World Cup semi-final at Wankhede Day, I mean, I just hope it is, it is a captain once again stepping up in Rohit Sharma. I think I just want, we have to talk about Rohit Sharma. I think the kind of cricket he has played personally in this tournament, very selfless. I think not much is talked about the way he's playing his cricket right now. I think, yes, India is scoring a lot of runs, but given the fact that the opening combination, the opening partnership, no one expected India to come after South Africa like that at Eden Gardens. और रोहित शर्मा decided कि मैं तो पहली बॉल से मारने वाला हूँ, pressuring Marco Jansen, who probably is in the team of the tournament for me. So I think we need to praise Rohit Sharma as well. Apart from his captaincy, I think his starts alongside Shubman Gill, brilliant partnership at the top of the order. The starts he's trying to give, and वही pressure release हो जाता है, on the middle order, including Virat, Shreyas, and KL. Even if we lose 2 quick wickets after the partnership, there's still time to settle down for the middle order. So I think overall I'm very impressed with what Rohit Sharma has done so far in this tournament, and long may it continue, to be honest. I don't know whether he has long left in his ODI career, but I think jitna bhi bacha hai, I think I just hope it is probably the best time of his ODI, of his international cricket career. Yeah, I feel like कि जो the version of Rohit Sharma, I think 2019 में भी 2019 में तो इससे भी ज़्यादा runs बनाए थे, and the way he scored runs, I think 5 centuries if I'm not wrong, in different stages में. And वहाँ पे the thing is कि, and that's the thing with experienced players, हम क्यों बोलते रहते कि experience gets counted when it comes to big matches, and that's why these are the players जो justify करते हैं कि experience की value क्या होती है and कोई भी tournament पे. And we have seen this कि वो जो सिचुएशन वाइज खेलना, हम बहुत सारे यंगस्टर्स के बारे में यही कहते हैं कि सिचुएशन को खेलना बहुत जरूरी होता है. आई थिंक इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर रोहित शर्मा. जैसे प्लेयर से एग्जांपल ले सकते हो, 2019 में ही प्लेड मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल रोल, जहाँ पे एट टाइम्स टीम फंसती थी, एंड ही यूज्ड टू काइंड ऑफ, मुझे स्टिल याद है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा मैच था
230 to 40 ऐसे कुछ तो टारगेट था एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दैट एंड वी वर अंडर प्रेशर एंड वहां पे अलग रोल था. ही यूज्ड टू प्ले ऑब्वियसली वहां पे भी शॉट्स एंड ऑल मारते थे बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती थी. यहाँ पे आई वोंट से कि वो इररिस्पॉन्सिबल खेल है बट द वे ही हैज प्लेड आई थिंक कि responsibility by playing aggressive cricket I would say and that's the term I will use for a player like him. Like कैप्टन तो है और इवन जो इंग्लैंड के अगेंस्ट इनिंग्स थी आई थिंक वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई बाय प्लेइंग थरोली थ्रू आउट द बैटिंग ऑर्डर. सो डिफरेंट रोहित शर्मा सब देखने मिले बट है तो एक ही बट उनके डिफरेंट वर्जन देख के लाइक कि एक ऐसे फेज में वी ऑल नो एज यू मेंशन कि कितना करियर वनडे करियर खास करके कितना यहाँ से 4 years स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल है फॉर अ प्लेयर लाइक हिम. So it's really nice to see him finishing on the top. I don't feel कि वो 500-600 रन वो जो नंबर मैटर करता है but the way he has given the Indian team the kind of starts I think उसकी वजह से वो जो प्रेशर बाकी किसी बैटर पे आया नहीं अभी तक नॉर विराट कोहली नॉर श्रेयस नॉर सूर्य या फिर रविंद्र जडेजा. So I think he has played a key role in absorbing the pressure start at the order. Yeah, I agree. I think it's a great point you make जहाँ पे because early wickets I think हमने ऐसा अब तक देखा नहीं है India 10 for 2 or 10 for 3 or like 20 for 2 20 for 3. I think a lot of credit has to go to Rohit and Shubman. But चल अभी हमने अच्छी बातें तो बहुत कर ली. Now let's come back to reality. First of all, what do you think? So I think 4 teams remaining. What do you think will be the final? I think prediction for the final की क्या लग रहा है final में कौन सी 2 teams जा रही हैं? Oh, that's too tough to kind of even think of कि यहाँ से अब कौन जा रहा है like finals में. India, New Zealand. It should be we. I want it to be us, but I think South Africa, Australia से कहूँ तो चलो I will go with. I want South Africa, so I would say South Africa. चलो South Africa from that they should, but again वहाँ पे भी same ही है कि ऑस्ट्रेलिया we can't rule them out, especially अगर कोई और टीम होती तो आसान होता साउथ अफ्रीका बोलना but still I'm backing they might do something spectacular. I think they have something stored in and this could be a special World Cup for them. So South Africa from that is still tough यार like बोलना तो एक वर्ड बोलना है but अभी भी डर लगता है कि कुछ हो ना जाए but इंडिया साउथ अफ्रीका फॉर मी इंडिया साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से. चलो टू सिंपली पुट इट आउट आई थिंक आई वोंट से कि फाइनल्स एग्जैक्टली किसमें होगा बट आई डू फील लाइक कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से एक टीम पक्का फाइनल खेलती है. आई वुड से दैट जस्ट टू पुट आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से एक टीम पक्का फाइनल खेलती है. I think then I hope it is South Africa क्योंकि तूने न्यूजीलैंड का नाम डाला है तो I just don't want that to happen. Yeah, I think for me it's going to be India Australia. I just feel probably out of the 4 teams I think Australia might have the edge in the second semi-final just because they have the experience to do that. India because we have played the best cricket in the tournament so far and I think we'll continue that tomorrow. I think जो भी nerves I think that is just before the game. Once the game starts I think we'll all settle. I think हम आराम से एकदम बातचीत करना शुरू करेंगे. We'll be happy with the way the team's performing. I just hope that we treat this as another game. Maybe like another league stage game or like another group stage game. To be very honest, नाम खाली semi-final. Maybe that's the reason there is extra pressure. But I just hope we just treat this as literally yet another game and not like a World Cup semi-final in front of our home crowd. So yeah, I think that's what I feel should happen. But yeah, we'll see. जैसे तूने कहा, less than 14 hours remaining for the game to begin. Very excited for the game. I don't think मुझे आज रात को नींद आने वाली अच्छे से. I'm going to get up at 6 o'clock in the morning, head to a bar or a pub to watch the game with a few friends and just hope that India wins tomorrow. I mean, I've been waiting for this for a long time. I think जब वो कैलेंडर निकला था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल जहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी हैप्पी कि मुंबई में हो रहा है बिकॉज दैट्स माय होम टाउन बट अदर देन दैट आई वाज होपिंग India makes it to the semi-final as well, and we have done it convincingly, very convincingly, to be very honest, deservedly as well. And we are facing New Zealand, who have lost a game after scoring 400 as well in the World Cup. So I think that gives me a lot of hope. Ankit, final thoughts before we wrap it up. क्या लग रहा है? Any nervous feelings in the? I mean, क्या लग रहा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में right now? Just to figure out कि like yeah, I think the toss I think that will set the tone for the match. So important really because you will feel when you bat first आपको लगेगा कि we should chase and when we will be bowling first by chance you will feel कि we should bat first. I think दोनों teams के लिए same feeling होगी but personally एक ही चीज मैं चाहता था ऑब्वियसली एंड
आई थिंक आई डोंट थिंक एक जो स्मॉल पॉइंट बिफोर वी एक्चुअली रैप अप आई फील कि आई नीड टू पुट इट अप इज कि यार एट टाइम्स थोड़ा डर भी लगता है ना कि यू नो व्हेन टूर्नामेंट्स लाइक आईपीएल या फिर इसके पहले भी हमने वर्ल्ड कप खेला है बट जस्ट टू पुट इट इन अ गुड ग्राफ आई वुड से बिकॉज वर्ल्ड कप में एक टीम को इसके पहले 4-5 मैचेस ही हम लोग ने खेल रहे T20 वर्ल्ड कप में भी सो आईपीएल में यूज टू फील कि यार नॉकआउट्स आते थे उसके पहले हम एक आध मैच यू नो यू डोंट वांट द टीम टू लूज इट इंटेंशनली बट होता है ना कि यार हमारा एक जो बुरा मैच था वो अब चला गया अब कुछ होने नहीं वाला तो वो हमारे साथ इट्स गुड दैट कि हुआ नहीं है बट वो डर भी रहता है लाइक वी हैड इनिशियली वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि अभी तक कुछ बुरा हुआ नहीं है लेकिन वो डर आसपास ही रहता है कि अब भी हो जाएगा अभी तक हुआ नहीं है सो Yeah. वो एक फीलिंग है थोड़ी बट लेट्स सी आई थिंक इतना अच्छा गया टूर्नामेंट सो देयर आर नो स्पेसिफिक Yeah. रीजंस टू गो एंड इट टर्न आउट टू बी अ बैड वन सो लाइक डोमिनेट किया अभी तक एंड होपफुली we can use this word on 19 November as well. Yeah, I think I completely, and that's human nature. And I think I mean, one thing is like being very overconfident, but one thing is like, ये चीज भी हो सकती है, वो चीज भी हो सकती है. It's not like negative or something, but yeah, I think it's always safe to think that कि ऐसा भी हो सकता है, rather than just putting all your expectation कि हम तो जीत ही रहे हैं बहुत easily. But yeah, I think तूने जो end में भी बोला that we've played the best cricket in the tournament, so I just feel I'm not too much worried about it. I think once the game begins, I'm going to be very happy, and I think I see myself now as clear favorites for the first semi-final. So yeah, that's pretty much it. Hopefully we win the game tomorrow. Jeet jayenge, so we'll be live on stream again to discuss the entire game. I think Ankit will be joining us as well. And we might have a few more guests, and just like the video, subscribe to the channel. Everyone जो बाद में देखने वाले हो, become a part of the family. Follow us on different social media platforms and keep the family growing. We'll see you guys hopefully in a very very good mood tomorrow and with a lot of celebrations as well. See you guys. Good night. Take care.